May 2014, I got back home from work one day and our house was being painted. For reasons we can discuss later, I don't do the capital allocation at home. Somebody else does that. So I had to show the painter, I'm the boss. So I said, क्या paint लगा रहे हो? And he said, मैं लगा रहा हूँ Dulux का Velvet Touch. मैंने बोला कि तुम गलत कर रहे हो बॉस, Dulux return on capital is only 16%. So तुरंत बंद कर दो. Painter said, नहीं, यही best paint है. So my colleague Rakshit Ranjan, he's our fund manager. He's also an IIT Delhi chemical engineer. So now to recover my pride, I called Rakshit and says, "Is this guy right? Is Dulux the best paint?" And Rakshit's a Punjabi from Pitampura. So he said in very blunt language, "Saurabh, kabhi tin dekh liya karo. Look at the ingredients. Look at the science, the chemistry. This is a ICI product. It's a world-class product. No Indian company can produce this sort of chemistry." I said, लेकिन हमारा champ Asian Paints. He said, sort of Asian Paints R&D spend as a percentage of revenues is 0.3%. The chemistry is very basic. 4 घंटे में गमले में बना के तुमको दे दूंगा. So that night I realized that I can read Warren Buffett till I go blind. India में कोई पैसा नहीं कमा पाऊंगा Warren Buffett पर. If you read Warren Buffett, you read American books, you will buy Akzo Nobel because brand is great. Dulux. Science is world class. IIT IIM के बच्चे पढ़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं वहाँ पे, right? बिल्कुल perfect. Akzo Nobel ticks every Western paradigm. आप सेठ क्लारमन पढ़ो, वॉरेन बफेट पढ़ो, माइकल मोगोसी पढ़ो, जाके Akzo Nobel खरीदो, कंपाउंडिंग मजा नहीं आएगा. पैसा कमाने के लिए आपको एशियन पेंट्स लेना पड़ेगा, लेकिन यार एशियन पेंट्स, how does he make so much money? The product isn't great. R&D spend is not great, right? So it took us 2 years to figure it out. And in the process, that journey of figuring out why Asian Paints makes this insane amount so well, we ended up writing our second book, The Unusual Billionaires. We named the book in honor, in memory, in celebration of the genius who gave us, and I think who gave the country, the paradigm for insane wealth creation. Right? If you ask one of the greatest promoters in India, they will tell you they have modeled their lives basis Champak Lal Choksi's life. He is the original Unusual Billionaire, the original founder promoter of Asian Paint, right? So here is what Choksi he did, and there's a lot to learn. Chapter 2 of my book, Unusual Billionaires, will tell you more about it. And he built the money machines that don't take and be surpassed. Till 1969, paint was sold like an FMCG product. So you would first advertise it, and you would have a wholesaler for Bombay, a distributor for, say, Kalina, and a dealer for the area near the Grand, right? So wholesaler, distributor, dealer, classic FMCG paradigm. In 69, Choksi called up his wholesalers and distributors and said, "You guys clear out. I don't need you. I will sell direct to the dealer in Kalina. सीधा factory से dealer के पास बेच जाए." The dealers protest. Dealers said, "Sir ji, you're giving us 3 rupees a liter. Our shops are small, so we don't have the space to keep so much paint. And even if we have the space, we don't have the money to hold on to so much inventory." So the dealer's request to Choksi was, keep the distributor. Distributor storage of financing करेगा, हम माल बेचेंगे, world will be perfect, right? If you get a chance to be Unusual Billionaires, you realize at the heart of all the great money machines in India lies a non-linear insight. That's what my next book is about, right? At the heart of all the great money machines in India lies a non-linear insight, which at that time looks like pure madness. And 30 years later looks like undiluted genius. Choksi's genius moment was 69. He told the distributor, "You get out. You're taking 30% margin. I'm not going to give you that out." And he told the dealer, "What I do for you, Mr. Dealer, is every 3 hours, I will replenish your inventory. You don't have to stock it. Every 3 hours, my truck will come and replenish it." People in Bombay said, "This is crazy. Every 3 hours means 4 times a day. You already have 40,000 dealers. How on earth will you deliver 1.6 lakh times a day?" The remaining 28 years of his life, what this man built is so powerful that today, 22 years after his death, nobody in their right mind can even think about competing with the folks Asian Paints across the world. सोच भी नहीं सकता कोई compete करे. क्यों ऐसा क्यों है? क्या बनाया है इंसान ने? 4 चीजें की. Paint is the only product in our country which goes straight from the factory to the dealership near your house. यहाँ पे करीना में paint आ रहा है सीधा अंकलेश्वर से. There is no intermediary in between. Paint is the only product which is stocked
restock at the dealership near your house 4 times a day, 28 times a week. Everything else you and I buy gets restocked once, maximum twice. Biscuit, soap, shampoo. Twice, Asian Paints is the only firm in India which takes home 97% of the MRP and 3% goes to the dealer. Every other company in India, every other product in India, 30 to 40% MRP goes to the channel, 60% goes to the manufacturer. 60 for everybody else, 97 for Asian Paint. And the fourth uniqueness, this is the barrier to entry. Today they have around 70,000 dealers, 7,000 dealers. 4 times a day, they're delivering anywhere between 2.5 to 3 lakh times a day. And this company delivers paint 2.5 to 3 lakh times a day. The number 2 player, Berger, delivers 40,000 times a day. Number 3, Akzo delivers 10,000 times a day. Forget paint, there is no company in any product, in any sector in India, which can deliver even 10,000 times a week. Forget Tinmed Haila. How does Asian Paints do it? How can they deliver with such frequency in a country where infrastructure isn't the greatest? Okay? The answer in one word is technology. Okay? In 1970, Shankar Choksi spent 8 crore rupees buying the first supercomputer in India. 10 years before ISRO or IIT Bombay, 21 years before any other Indian conglomerate. If you ask any SAP consultant in the world today, the world's finest ERP implementation is not Amazon, it is Asian Paint. What they have done in simple English is this. For every neighborhood in India, for every hour of the day, for 50 years, they have collected data on what colors are selling, what quantities are selling, what tin sizes are selling. This mountain of data is their money machine. This mountain of data is why the smartest people in the paint industry say nobody in their right mind should think about competing with Asian Paints. And what they do, and I'll explain in simple terms and then we'll move on to little chats, is this. If you go to the local dealer in Kalina and you ask him, sir, Sham ko 8 baje, what will you be selling in Kalina? The dealer will... Guys, are you with me? Hello? Yes. Now this is what I want you to hear. I want everybody to hear this part very carefully. I have no idea. I'm watching something on my Jio free phone. I don't have time to figure out क्या बचेगा. Asian Paint truck comes every 3 hours. जो भी माल उतार के जाते हैं 3 घंटे में बिक जाती है. So we can be the... ये समझ में आया? एशियन पेंट्स का ट्रक आता है, वो माल उतार के जाता है, जो भी माल उतारता है 3 घंटे में बिक जाता है. जो भी माल उतारता है 3 घंटे में बिक जाता है. This is IMS at its best. किसने पकड़ के गोल्ड रैट छापा है? गोल्ड रैट से पहले गोल्ड रैट छाप दिया. He doesn't know much about these things. Let's go and meet the area trade manager. But if he asks, what will you sell in Bombay tomorrow? How much is supposed to know? This is a 120 dealership, post-tip. 480 times will be selling paint tomorrow. He says what happens is early in the morning, 4 a.m., I'll get an email in my inbox. saying ये घाटकोपर ईस्ट की लोडिंग है, ये घाटकोपर वेस्ट की लोडिंग है, ये मालाबार की लोडिंग है, ये वालकेश्वर की लोडिंग है. And she basically just follows the automated email which tells her what is the loading schedule for the day. If you go to the Ankleshwar factory, the production manager will tell you the same thing. Early in the morning, he gets his production schedule for the day. The procurement manager will tell you the same thing. If we go across the road, if they let us in across the road, if you ask them that say on 27th April in Pune, in Viman Nagar at 5 p.m., what will you say? They can tell us right now with 98% accuracy. Right? That is the power of what they have written. Now, this entire system is automated. Raw materials day, finished product. It gives a working capital cycle of 8 days. Raw material to cash and bank are thinking. Berger Paints, really well-run company, 1/3 the size of Asian, top line में, working capital cycle 45 days. Asian Paints ROCE 40, Berger ROC 25-27.
AkzoNobel, the best paint in India, 1/10 the size of Asian, working capital cycle 105 days, ROC 60%, 40, 25, 60. Best paint in India, AkzoNobel, the best paint company in India, Asian Paints, right? And this barrier to entry is not just unbeatable. Data किसी के पास नहीं है. This barrier to entry goes up and up and up every day. Because every day, Asian Paints sells to 55% of the country 4 times a day. 55 goes up to 20. Berger sells to 20% of the country twice a day. 20 to the 40. Akzo sells to 10% of the country once a day. 10 ones are 10. Hर 40 200 की. हर रोज Asian Paints collect 6 to 20 times more data than anybody else. That refines the working capital even further. The forecasting of Viman Nagar gets tougher. The working capital cycle crunches further. I make more money. Right? So the only three things that matter, अगर आपको पैसा कमाना है इंडिया में, the only three things that matter, promoter shouldn't be a chore. The promoter is a chore. भगवान बचाए आपको, भगवान बचाए मेरे. First step, promoter shouldn't be a chore. वो separately की. ये क्या है? 80% कंटिन्यू हो जाती है. That's second thing. एक सेकंड ना. The product has to अच्छा ये ऐसे है. जस्ट अ सेकंड. खत्म हो रहा है. first step, promoter shouldn't be a chore. वो separately की. 80% कंटिन्यू खत्म हो जाती है. That's second thing. The product has to be essential for day-to-day life. And third thing, the barrier to entry should be as high as the Himalayas. Barrier to entry नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा. Then we use Asian Paints, right? So if you see that mill, क्या समझ में आया? data is everything. वो तो समझ में आ गया. डिस्ट्रीब्यूशन वालों को क्या समझ में आया? डायरेक्ट डीलर रखो, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं. और डिलीवरी, जो स्पिन सेलिंग रीफिलिंग ऑफ इन्वेंटरी, जो इन्वेंटरी रीफिलिंग है, IMS for retailers and just in time. बेसिकली उसने सिर्फ एक ही चीज की है और उसने किया है ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड. ये पूरी साइंस ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड पे चल रही है और कुछ नहीं किया उसने. The heart, at the heart of all of this is a science which says order what is sold. हर 3 घंटे में ट्रक आता है, जो माल उतारता है वो सारा माल 3 घंटे में बिक जाता है. अगले 3 घंटे में वापस ट्रक आता है, 3 घंटे में माल उतारता है और सारा माल बिक जाता है. सर और काम और किया था इन्होंने. एक काम और किया था एशियन पेंट्स ने कि ये सिर्फ व्हाइट पेंट देते हैं सर, वहां पे कलर वही बन जाता है और दे गिव यू अ कलर चार्ट, व्हाटएवर कलर यू वांट टू चूज. ये मशीन वहीं पे लगाती है सर रिटेलर के यहाँ पे और कलर वहीं बन जाता है. वो बटन दबाते हैं, नंबर डालते हैं कलर पेंट का और वहीं कलर बन जाता है सर. तो ये सिर्फ व्हाइट देते हैं एज फार एज आई नो. नहीं सर, कलर वहीं बनता है वहां पे मशीन में. अरे वो कलर नहीं बनता वहां पर, उसको मालूम ही नहीं क्या माल बनेगा. वो सारा माल उतरता है, माल बिक जाता है सारा. फिर उसके अंदर ना पिगमेंट टेक्नोलॉजी पार्ट है. जब विपुल जी बोल रहे हैं ये वहां पे मशीन लगी होती है सर, वो बटन दबाते हैं, रिटेलर ही बटन दबाता है सर, वो नंबर डालता है पेंट का और वहीं कलर बन जाता है. आपको जो कलर चाहिए अपने घर के लिए 1 लीटर 2 लीटर वहीं बना के दे देगा वो. तो फिर उसके लिए तो फिर यू डोंट नीड एनी डेटा मैनेजमेंट. सर वो टाइप ऑफ पेंट भी अलग अलग है ना कि आउटसाइड का अलग है, इनसाइड अलग है, वेलवेट टच अलग है, ये अलग है. हाँ तो वो सिर्फ व्हाइट पेंट नहीं होगा ना, फिर तो उसको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं. तो वो सिर्फ व्हाइट पेंट बना रहा है और कलर मिक्स सारे डिटेलर को दे रहा है. फिर उसको डेटा सेंटर क्यों चाहिए? नहीं सर, उनके पास कलर पेंट भी है.
They have a lot of code numbers and shade numbers जिसके हिसाब से हाँ, so let's draw that. Let's look at the model that otherwise they don't need data, they don't need a supercomputer, they don't need anything, they don't need a chart at 4 AM in the morning कि कब क्या कहाँ किसको जाएगा. फिर तो simple है, white paint जाना है सबको भेज दे. So but let's look at this model. Okay, बाकी सबको क्या समझ में आया? There may be a color mixer for some things, this, that, some. There might be something more. I don't know of the color mixer, so maybe you're right. I don't know. I'm saying, but beyond color mixer, there is a huge machine that's operating here. I'm saying, what did you understand out of this? Because this is the core of every distribution and every retail model. And by the way, this is not something in the air. This has also been replicated by one BCI participant, and he started this off. But that's a separate story. Now tell me, what did you understand about this? इसकी core science पकड़ी क्या? Core to all of this is only one technology which says order what is sold. ये बात समझ में आ गई? अरे समझ में आई क्या नहीं आई? और ये हर बिजनेस में लगती है, चाहे वो रिटेल हो, anybody who has a product. This is what matters, and this is the only thing that matters. This is the science. This is the magic. This is what will make your business truly a magical business. This is the magic. So I call it the best distribution model in the world. So ये वीडियो है इसका कि बाबा ये जाके देख लो. डिलीवरी बॉय, अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है in a distribution setup? Delivery boy visits the retailer once in 3 days or once a week. ये कर सकते हो क्या? Yes, Rahul. If you sell 100, you should manufacture 100. Okay. ये कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेरे को ये रिस्पॉन्ड करो इसका आंसर. Yes, yes, नो करते जाओ. ये कर सकते हो क्या? डिलीवरी बॉय रिटेलर के पास जाता है और उससे पूछता है कि पिछले 3 दिन में क्या माल बिका या पिछले हफ्ते क्या माल बिका. उसको ये बोलना है कि भाई तुम्हें सिर्फ उतनी चीजों के पैसे देने जो बिका उसके पैसे दे दो. जो बाकी रह गया अगर तेरे को नहीं चाहिए वापस कर दे, नहीं तो उसकी थोड़ी क्रेडिट बढ़ा देते हैं. और जो बिक गया उसको रिप्लेनिश कर देते हैं. सिर्फ जो बिका उसको रिप्लेनिश करना है. यू कैन ऑफर सेल और रिटर्न पॉलिसी. या तो आप बेच दो और पैसा दे दो या आप रिटर्न कर दो. क्रेडिट हम डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों देते हैं, रिटेलर को क्यों देते हैं? क्रेडिट हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसको नहीं मालूम ये माल कितनी देर में बिकता है. तो वो ये बोलता है कि एक काम करो, मेरे हिसाब से 30 दिन में बिक जाएगा. 30 दिन में जब ये बिक जाएगा पैसे दे दूंगा. मगर अगर माल बिक चुका है तो हम हक से उसको बोल सकते हैं भाई माल बिक गया तो जितना बिका उसके पैसे दे दे, बाकी सबके पैसे थोड़ी मांग रहा हूं. प्रॉफिट अपनी जेब में रख, असल मेरे को दे दे. You pay for the transportation. This is critical. आप transportation के लिए पे करोगे. And this is the best model of distribution in the entire world. There is no model close to this model. And can you do this? Can you replenish what got sold? Yes, no. अरे हाँ नहीं. Sir, I have a question. एक second. Can you offer sell or return policy? Gaurav, no. Sir, we are doing made to order garments, right? I mean, I don't even know what fabric they will order next. No, in made to order you can't do this. पर एक्सपोर्ट में भी पॉसिबल नहीं. Made to order में नहीं possible है. Yeah, I'm saying if you have a distribution setup where you're doing regular items, in that case. But when you're doing made to order, rural remote areas also you do the same. Now you say कि वापस दे दे जो भी करना है. Isn't it obvious पड़ी है? अरे isn't it obvious पड़ी है? और exports के लिए I'll just come back to you, Gaurav. If you can pull that off, exporters, you become the king. Every exporter will just come back to you. And you know what? Do you know what you have? So let me just finish this, then we'll go to exports. Remind me, Gaurav, I'll just come to you. Okay, you can offer sell or return policy. Can you do this? And you pay for the transportation. Can you do this? If you do this, this is the best model in the world. You can do all of this. आप ये सब कर सकते हो.
आपको कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा थोड़े दिनों में अगर वो डेटा इकट्ठा करने लग जाओ। अगर ये डेटा इकट्ठा करके आप लेवल 1 गूगल शीट पे भी डाल दो, बाद में इसका हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, मगर लेवल 1 तो ये बन ही जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबडी? अरे सबको समझ में आया क्या? Sir, you pay for the transportation for the new clients or for the existing client also? Everybody. Everybody. Feed the data into your system slowly. No, एक second. Slowly you will know the usage pattern which will help you to do production accordingly. Feed the data into the system, you will know the usage pattern which will help you do production accordingly. 8 working days from raw material buying to cash in bank. 8 working days. Mind blowing. मतलब ये तो माल खरीदने से लेके पैसा जेब में आने के 8 दिन in a manufacturing. Goal is to create a model to replenish what gets sold at the retailer level. ये गोल है बस, ये कर लो किसी भी तरीके से। अगर आपने ये कर लिया, आपको ना सेल्स टीम चाहिए, ना ग्रोथ चाहिए, ना CRR चाहिए, ना OTP चाहिए, ना सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। एवरीथिंग वैनिशेस। जो डिलीवरी बॉय है वो आपका सेल्स का लड़का बन गया। आपको सिर्फ एक सेल्स टीम चाहिए टू ओपन न्यू आउटलेट्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। ये समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई क्या? समझ में आई नहीं आई? सर उसने क्या बोला था? 97% ऑफ MRP पेशेंट ले जाता है। मान्यवर 80% ले जाता है। 80% मार्जिन है मान्यवर का। सिम्फनी ने सारा मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रखा है। गौरव क्या कह रहा है? हमारी कंपनी वालों को भेजता हूँ आपको। हाँ जल्दी भेजो। ओके गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, नो? तो लास्ट स्लाइड एक बार वापस बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, जब माल देने जाते हैं पार्टी को, मैंने किया एक्सपेरिमेंट लास्ट ईयर, ये रिटेलर्स को माल देने गया, वो ना तो रिपीट नहीं कर रहा, ना पेमेंट दे रहा। उसकी पेमेंट के फॉलोअप में 1 लाख का माल दिया है उसे, उस माल के फॉलोअप में ही आदमी परेशान हो जाता है। वो नहीं तो वो तो इसलिए है क्योंकि आपका जो हिसाब किताब है वो अभी ऐसे चल रहा है ना। आप उसको अलाइन करके बोलोगे कि जो माल बिक गया वो माल के पैसे लूंगा, जो माल आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है ये बिकेगा नहीं, वो मुझे वापस कर दो। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मैं दे रहा हूँ, सारी सब कुछ मैं दे रहा हूँ, और पहले उसको अलाइन करना पड़ेगा। सेल्स वाला अलाइन नहीं कर सकता, सेल्स वाला अलाइन करने में इंटरेस्टेड भी नहीं करेगा वो। ये अलाइनमेंट आपको कंपनी लेवल पे करनी पड़ेगी कि आज से काम करने का तरीका बदल गया। अब हमको ये करना पड़ेगा SSG में। पहले आप एक एरिया पे 10 डिस्ट्रीब्यूटर को, 10 रिटेलर को, 20 रिटेलर को पकड़ के उनको अलाइन करो, और फिर वहां से ये चक्का घुमाना शुरू करो। ओके, वो भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। यस, मैं ट्राई करते हैं उसको दोबारा से करो। गौरव लुगानी। यस सर। नाउ दिस इज अ टफ but short winning strategy. Now the strategy goes like this, is that you have to tell your people, the people you sell to, that listen, let me share with you a science and we'll experiment with this science, right? And you work with somebody like Roshan, who did this? रोशन did this, no? रोशन आपने किया ना ये?
Roshan, Sir, there is the one basic difference what Gaurav is saying. Whatever we make for an export client, we brand it to his label. अभी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने अपने रिटेल क्या किया? तो मैंने तो यही किया जो आप बोल रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यू आर टॉकिंग अबाउट, कि वी आर प्लेसिंग इट विद द रिटेलर, वो बिक जाता है, वो उसके पैसे दे देता है। नहीं, उससे पहले वो बोलता है मुझे वैरायटी दिखाओ, मुझे नया दिखाओ, मुझे वैरायटी दिखाओ, मेरे को नया दिखाओ। आपने बोला एक काम कर, वैरायटी और नया मैं दिखाता जाऊंगा, तू एक काम कर, ये रही मेरी पोटली पकड़ ले। बिल्कुल ठीक है, और अगर चाहिए होगा माल मंगवा लियो। वो क्योंकि वो पोटली ऑलरेडी प्रूवन पोटली है, तो वो बिकती है और 3 दिन बाद उसका ऑर्डर आ जाता है। यस यस। अब सेल्स वाला गायब हो गया इस मॉडल में से, तो सेल्स कोऑर्डिनेटर पूरा काम कर लेती है। अब सारा सिस्टम गायब हो गया, वो उसने ऑर्डर सिर्फ इस पे देना, थोड़ी देर बाद आप उसको ऐप पकड़ा दोगे या उसको ऐप पकड़ा दोगे, व्हाट्सएप पे वो ऑर्डर दे देगा और सिस्टम में एंटर होके उसके पास माल चला जाएगा। एग्जैक्ट। बट वो एक सेकंड स्टेज है। गौरव, द थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर so called fashion buyers, fashion experts, so called fashion experts, is that listen, please don't use fashion, now you can't put it like this, but you सबसे पहले मुझे दफा करेंगे। So put it, I can say this to you, you can't say this to them, so you put it in your own terms कि बाबू देख, तू ना ग्रेट है XYZ, एक काम कर, जो माल बिकता है ना, जो माल बिकता है ना, उसका मेरे को डबल ऑर्डर दे दे, अगर वो माल आगे बिका नहीं तो उसके पैसे मैं भर दूंगा। नहीं सर, नहीं, 500 ऑर्डर प्लेस कर देगा वो मेरे साथ एक ही दिन में, सारे सप्लायर्स के। That is all they want. They want to be able to reach a point where they can return their merchandise to the manufacturer. अरे सुन ले यार, हमको एक चीज चाहिए सिर्फ, हमको ये चाहिए जो माल बिक के अभी स्टॉक आउट टाइप्स हो रहा है, वो वाला माल मुझे बता दे, वो वाला माल का ऑर्डर मुझे दे दे। अगर वो माल नहीं बिका, सिर्फ वो स्टॉक आउट वाला माल, अगर वो माल नहीं बिका तो उसके वो माल मैं वापस दे दूंगा, मगर मुझे स्टॉक आउट का प्रूफ दे दे बस कि इतना माल बिक गया। मेरे को तू सेलिंग डेटा दे दे, उसमें से मैं तेरे को माल बना के दूंगा। 2 चीजें हो रही है, एक तू मेरे को ऑर्डर कर रहा है गौरव, अब मैं हूं गौरव लोगानी, तू है बायर, अब यू आर गिविंग मी द ऑर्डर एवरी टाइम, आई मेक अकॉर्डिंग टू योर नॉनसेंस ब्रेन, द फैशन ब्रेन which works, which does not work. Now your fashion brain says make all of this, at the end of the season the retailer or somebody in the chain is left holding the baby. Yes, now you give me whatever order you want and give me the data of what is getting sold. Now based on that I will manufacture something and I will give it to you. Now if that does not work, I will take the whole shipment that I have made, not your order but the shipment that I have made, मैं वो वापस ले लूंगा। मेरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बिकेगा ही बिकेगा, उसमें मेरी गारंटी है। Now in this I don't want you to put too much of money in this. I want you to look over it, think over it. Now why am I saying, if you achieve it once, Gaurav, you have a winner model, because they at the beginning will not be able to understand this model for at least 1 or 2 years, and you will become their number 1 most preferred supplier, because जो भी तुम बना के दे रहे हो ना वो स्टॉक आउट हो रहा है, फिर बना के दे रहे हो फिर स्टॉक आउट हो गया, फिर बना के दे रहे हो फिर स्टॉक आउट हो गया। Now they don't need to present another model to you, they don't need to sell anything, you don't have to pitch to them, they don't have to buy from you. You say ये जो फैशन बना रहे हो ना, फैशन किसी और से बनवा, मुझे डेटा दे दो क्या माल बिक रहा है, मैं उस हिसाब से माल तुम्हें चर्न करके देता जाऊंगा, तुमको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, जो नहीं बिके मुझे वापस कर देना। Sir, I am going to sleep over what you're saying. Let me figure this out. One point is, when you start taking this repeat wala business, then price becomes a big factor. Then this whole edge that I will charge a premium on my price, that will become harder, because in their minds, even though it may not be true, they will feel that if you have an order which is selling outright, तो वो तो कभी नौबत ही नहीं आएगी कि वो stock out होगा. So why should I then compromise by
this scheme doesn't work for them then, right? नहीं, I don't Depends understand. upon- Stock out होगा मतलब? मतलब जब भी good stock out होंगे नहीं, they're like news, they're never out of stock, they're always selling throughout the year. तो अगर इस तरह का product है तो वो तो it's going to be commanded by price, not by these terms which I'm going to offer, that if you're unable to sell it then I'll take the stock. So they will want a lower price from me if I want all their loose business. Later, after they figure this out. No, sir, they already know what sells well, right? I mean, there are certain They're not giving you reorders for that. They're not giving me because I don't really do a lot of the loose stuff, but there are some suppliers who only do loose. So, like, you know, leggings, I do a leggings for a particular brand. वो पूरा साल legging में बनाता हूँ. But the minute I change the product line even a little bit, let's say wrap dresses are selling today. Okay, listen. Right now, I'm not getting into this, but we'll have a conversation on the phone. Okay, sir. Let me share with you, Rosh, and everybody, all of you who are exporters and in the fashion industry. Right now, you have a killer idea. That idea is based on order what is sold. Now you see how you can leverage this science. Either you can go to the retailer direct, or you can do something. So there is somebody I know, and they manufacture and they consider themselves as a design house, and they manufacture and they only sell to retailers internationally. They don't sell to any buyer. Hemant and Nandita. Yeah. They do that. And they charge and command a premium of I don't know how much. It's really expensive what they make. ये Laconet Hemant की बात हो रही है? नहीं, Hemant and Nandita का नाम से लेबल है. Okay. Now they sell only to the retailer. They don't sell to a buyer. And Gaurav, they sell to Nordstrom and all these people. Okay. So that's something which we do also, no? Similar thing? No, they sell in their own brand. They sell their own brand. Achha, okay. They sell a brand, okay. So if you start making these things which are never out of stock, you become a brand, no? Sure. I mean, then you can take the risk. You produce it and you, under your brand name, say that, you know,